Hi everyone, hope you're doing well. You're watching my channel English Literature, and in today's video we will discuss about the types of writings in English literature, that how a writer can write in many different forms in literature, and we can study either prose, either a novel, or it can be a drama. Different things which can be written by a writer, and also we will study it through the examples. So let's start with the prose. Prose is an ordinary written or spoken language without a structured meter like poetry. पोट्री में क्या होता है कि मीटर होता है स्पेसिफिकली, विच इज़ स्पेसिफिक रिदम होता है. इट इंक्लूड्स फिक्शन और नॉन फिक्शन. सो ये फिक्शन भी हो सकती है और नॉन फिक्शन भी हो सकती है. तो ये प्रोज जो है वो एक सिंपल राइटिंग है, एक राइटर की तरफ से लिखी गई ऐसी राइटिंग है जिसमें जो है वो अपने एक्सप्रेशंस को बता सकता है, अपनी कोई स्टोरी बता सकता है, या उसका कोई ख्यालात हैं. सो उसको एक हम टेक्स्ट बुक्स में जिस तरह हम पढ़ते हैं रीडिंग्स, वो एक प्रोज की फॉर्म में होती हैं. तो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकन्स. सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ प्रोज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नोवेल. नोवेल लॉन्ग होती है, फिक्शनल नरेटिव है जो कि जिसमें डेवलप करेक्टर्स होते हैं, प्लॉट होता है, सब प्लॉट होते हैं, सेटिंग होती है. So these are the components which made a novel. It explores the themes over a extended length. So इसमें जो conflict वगैरह पहले characters का introduction होता है, फिर उसके बाद conflicts raise किए जाते हैं, फिर उनकी resolution होती है. So इसकी example में जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रीजुडिस जो है एक example हम ले सकते हैं. फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं नोवेला की. नोवेला भी जो है वो एक नोवेल टाइप की राइटिंग है, लेकिन ये शॉर्टर होती है देन अ नोवेल, बट लॉन्ग होती है देन अ शॉर्ट स्टोरी. सो इट फोकसेस ऑन अ सिंगल प्लॉट विद लिमिटेड करेक्टर्स. तो इसमें लिमिटेड करेक्टर्स हैं, एक सिंपल सिंगल प्लॉट है, एक ही सेटिंग है उसकी, एक ही जगह पर उसे बताया गया है. सो इसकी एग्जांपल में आ जाता है एनिमल फॉर्म, विच इज़ वेरी फेमस, ऑल्सो अ फेमस सॉर्ट ऑफ नोवेला बाय जॉर्ज ऑरवेल. देन वी विल डिस्कस अबाउट दी शॉर्ट स्टोरी. शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? ब्रीफ फिक्शनल नरेटिव है, फिक्शन पे मेजॉरिटी बेस करती है इसकी, और ये फोकस करती है एक सिंगल इवेंट पर या थीम पर, जिसमें ऑफन विद अ ट्विस्टेड एंडिंग्स होती हैं, जिसमें काफ़ी सारे हमारे शॉर्ट स्टोरी राइटर्स जो हैं वो फेमस हैं. द टेल हार्ट बाय एडगर एलन पो, विच वाज अ वेरी फेमस राइटिंग बाय एडगर एलन पो. So now let's talk about the essay and what is its characteristics. An essay is a short piece of non-fiction writing that presents an argument, opinion, or reflection. So as we know, we write essays from when we are children, and we discuss about a specific argument or an opinion, or we can say we describe an events and the happenings, or we can also write the introduction and description of a person. So these are also included in an essay. So इसके examples में of studies आ जाते हैं फ्रांसिस बेकन के और भी major essays हैं, because he is a very famous essayist, like of friendship, youth and age. These are included in the form of essay. So now let's talk about the biography जो है वो लाइफ स्टोरी है of a person written by someone else, often highlighting achievements and personal details. So जो बायोग्राफी है उसमें किसी भी स्पेसिफिक जो पर्सन है उसके सारे लाइफ के इवेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, वेरी माइन्यूट डिटेल्स, विच इज़ रिटन बाय वेरी क्लोज पर्सन, और अ पर्सन हु ऑब्जर्व हिज लाइफ वेरी क्लोजली, like life of Samuel Johnson, and also which is written by James Boswell. So this is the small introduction of biography. Now let's talk about another form, which is memoir. Memoir is a type of autobiography that focuses on personal experiences or specific period in a person's life. So memoir क्या है? एक person के specific जो life है उसमें specific जो event हुआ है, कोई जो यादगार है, एक memorable event है, so उस पर एक writing होती है, या उसका personal experience हो सकता है of his lifetime. Example इसमें हम ले सकते हैं A Movable Feast by Ernest Hemingway. So let's talk about another thing, which is letter.
Letter used in literature to tell a story or convey thoughts, often forming a part of plot. For example, in Dracula by Bram Stoker, which is written in letters and diary entries. So this is also a very famous writing, Dracula बाय ब्रैम स्टॉकर. तो लेटर क्या है कि एक स्टोरी को हम बताने के लिए या कन्वे करने के लिए थॉट्स को हम लिखते हैं, और ये पार्ट हो सकता है प्लॉट का. सेटिंग में इसको यूज़ किया जा सकता है. Now let's talk about another thing, which is journal or diary writing. So it is a very famous and very quite interesting sort of writing wrote by a specific writer. So journal क्या है कि पर्सनल रिकॉर्ड है ऑफ डेली थॉट्स हैं, इवेंट्स हैं या रिफ्लेक्शंस हैं, आइदर रियल और फिक्शनल. सो इसमें हम सारे इवेंट्स को कंसीडर करते हैं और ये पर्सनल रिकॉर्ड होता है जर्नल में. और इसकी एग्जांपल्स में आ सकते हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक. So it is a very famous diary which is written by Anne Frank. And now let's talk about the ड्रामा एंड प्लेस. ड्रामा जो है इसमें हम बात कर लेते हैं फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जिसमें राइटर इस इंटेंट से लिखता है कि उसे परफॉर्म किया जाएगा स्टेज पर. सो रिटन इन डायलॉग्स एंड एक्शन. सो इसकी जो एग्जांपल्स में आ जाते हैं, हैमलेट आ जाता है बाय विलियम शेक्सपियर. And we all know how great writer and a dramatist William Shakespeare is. So these are the all writings, or we can say types of writings in English literature which mostly are written by writers. And this was today's video. Hope you like it and understand it. For more literature insights, hit the subscribe button and like the video and comment if there would be any question. Thank you very much for watching the video.